So we will discuss about the design of experiment Taguchi approach. In the last lecture we have discussed about the full factorial approach, but here we will discuss about the Taguchi approach because there are the certain some limitation of the full factorial design of the method, as as the name suggests itself that the full factorial is the all the possible combination of the factors, and actually once the number of the experiment is going to be increased, your total number of the experiment once the factors number is going to be increased, or you can say that its level is going to be increased also, then its number of experiment is going to be increased, ultimately which results in the again more costing of the experiment and time, and generally the manufacturers doesn't want to give the more times, or you can say that they want to save their times and the cost. And in this approach, Taguchi approach is, or you can say that Taguchi is the Taguchi was the electrical engineer, and he was invented the given the approach in order to design the experiment, so that the experiment should be the cost effective. And apart from the designing of the experiment, Taguchi also gives the optimization techniques, and Taguchi is applicable to only the single objective function when it is used for the optimization technique. So, or you can say that Taguchi is utilized for the single objective or single response approach for the optimization. And in this lecture we will discuss that how the Taguchi is going to, in order to make the experiments in the effective way, and how it will go for the optimization techniques. So starting with the first lecture, in that all the DOE techniques was introduced or given by the Fishers, and he want to find out the how much rain and the sunshine or the fertilizer quantity it should require to produce the best crop. Because we have already said, start with that example is that suppose if you if you have a certain piece of a land and you are going to use the quantity of the fertilizer in order to enhance or increase the productivity or yield of the crop. Suppose if you use the 1 kg of the fertilizers, the crop yield is going to be increased by the 2 times or the 3 times or something. Or you can say that if you are increasing the number of the fertilizers, your yield is going to be increased. Then it's not necessary that if you are always adding the fertilizers quantity and your yield is going to be increased, because at the certain period of a time the land availability will become the small for the fertilizers, and definitely its yield is going to be affected, or you can say that after a certain period of a time the yield is going to be decreased with a certain quantity of the fertilizers. Okay? It's not necessary that while adding the quantity of the fertilizers always result in the increasing the yield. It gets to some saturation point, and after the saturation point its value is going to be decreased. So so this is the statistical way that he has wanted to adopt in order to analyze the effect of the rain and the sunshine and the fertilizer quantity simultaneously over the output, or you can say that yield of the product. ठीक है, इंडिविजुअल का जानना होगा तो मैं क्या करूंगा, इंडिविजुअल को जानने के लिए मेरे को क्या करना है. सपोज करो कि इफ यू आर गोइंग टू, मैंने जैसे लास्ट लेक्चर में एग्जांपल दिया कि अगर मेरे को स्पीड का इफेक्ट देखना है सिर्फ और सिर्फ
क्वालिटी ऑफ ए प्रोडक्ट, सरफेस क्वालिटी ऑफ ए प्रोडक्ट, तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ और सिर्फ स्पीड की वैल्यू वेरी करूंगा. लेकिन ऐसा इन जनरल इन द रियल लाइफ सिनेरियो में ऐसा बहुत ही नहीं होता है. कोई भी प्रोसेस हो, ठीक है, देयर आर द सम multiple factors are acting on the process and they are going to affect the output characteristic. As the multiple factors acting on simultaneously, then he has proposed the different statistical technique in order to determine the effect on the outputs. And for that, first we have studied the design of the experiment by using the full factorial approach, but here we will study the Taguchi approach. So as we have discussed in the last lecture, 2 की power k full factorial design. As in the full factorial design, or you can say that levels are defined into the only the 2 levels, high level and the low level. Suppose if you have the four levels for the you can say that 4 level for the speed, that is the 4 different values for the speed, that is the 200, 300, 400 and 500. Then if you are using the full factorial method, then 200 rpm is considered as the low value and the 500 has been considered as the high value, and in between all the 300 and the 400 cannot be assumed. And if you are going to, this is the limitation of the 2 की power k full factorial design of the experiment, because already there we have defined that their level should be the 2 for the every factors, or you can say that if there will be the k number of the factors, and there will be only the 2 levels, चाहे आपका speed हो, चाहे feed हो, चाहे depth of cut हो, the all the levels it should be for the all the levels for the each factor it should be assigned as the only high level or the low level. This is the limitation of the 2 की power k full factorial design of the experiment. However, if the number of the factor is going to be increased, or you can say that number of the levels is going to be increased, then it is going to then you cannot solve with the help of the 2 की power k full factorial design method because of the limitations. As I have said that in that 2 की power k only two levels are the defined. लेकिन अगर आपको इफेक्ट देखना है 200 पे भी, 300 पे भी, 400 पे भी, 500 पे भी of the different speed value, different value of the assigned speed, then its number of the experimentation is going to be increased. Suppose if you have the 2 level and 3 factors, or you can say that there are the 3 levels and the 3 factors. Suppose if you are doing in a turning operation, then the 3 controllable factors has been assumed as the speed, feed and depth of cut. These things you are going to be these are the controllable factors that you can set on the machine. So if you are the 3 different values for the each factor, then your total number of the experiment is going to be increased. Suppose if you are considering as the 3 factors and the 3 levels, then total number of the experiment, or you can say that possible combination of each factor is the 27. So they are denoted as the n की power k, level की power factor. Suppose if you have the 4 factors and the 4 levels, then the total number of the experiment is the 4 की power 4. So as you look here, if the number of the factor is going to be increased, the number of experiment is going to be increased. So what will happen, that it will going to increase the experimental cost and the time. So जब experimental cost और experimental time बढ़ेगा, तो definitely the manufacturers tries to minimize the number of the experiment. So in order to minimize the number of the experiment, Taguchi utilizes the orthogonal array concept in order to minimize the experiment. If you look here, that is the
three factors and the three levels, and three factors on the three levels, then there is the total possible combination of the experiment is the 3. That is this is called as the full factorial design of the experiment for the when we are considering the three factor and the three level. Suppose if you are this you look that the for the factor A at the low level, factor B at the low level, and factor C at the low level. That is the all the denoted by 111, and third third level is the denoted by the 3, and the 2 is the 2. So possible number of the combination is the 1 1 2 1 1 3 and 1 2 1. So this is the total possible number of the combination of the experiment. As if if you are considering here that am I audible? Yes, sir. Yes, Okay. sir. So you look here that the total number of the experiment is going to be 27 here. So as of now, as the if you can say that there is only 27 experiments, and you can easily conduct the 27 number of the experiments, and you can find that whatever the results and whatever the time. But for the better understanding, if you can see that if your number of the factor is going to be increased, suppose if your the factor is the 5 and the level is the 3, then there is the total combination of the experiment is the 125. Similarly, when the number is going to be increased, your number of the experimentation is going to be increased. So in order to minimize the number of the experiment, Taguchi utilizes the orthogonal array concept. Orthogonal array concept is that it is used to, or you can say that it is all order the t tuples, or you can say that if you have the, if you look here, they follow the lattice matrix. The lattice matrix, you can say that lattice matrix, and the lattice matrix is nothing like that. If you look here, if there is the factor is that A, B, C, then B, C, A. If you look here, that each this is called the lattice matrix. That lattice matrix, the ones, whatever the one variable that has been repeated in the column or the row, it is only one time. If you look look the value of the A, here it appears in the row wise only one, and the column wise only one. If you say that, if you look here, it will appear as the one, and column wise it is here, row wise here. So this is the lattice concept of the lattice matrix, is that whatever the factors, it will repeat only once in a single, in a row or a column. So that's why if you go for the Taguchi approach, the always there has been mentioned as a L9 orthogonal array. L9 orthogonal array, that L is comes from only the from the lattice matrix. In general, if someone asks you that what does L denotes in the Taguchi method of the design of the experiment, then you can say that Taguchi follows the orthogonal array concept, and the orthogonal array concept means that it follows the lattice matrix concept. As from this lattice matrix concept, the word is derived from the lattice matrix. So what happens that in the lattice matrix, suppose that total number of the experiment is the 27, and this, your aim is to minimize this number of the experiment. So how can you minimize this number of the experiment? So if
if you can say that I will take the only 4 or 5 number of the experiment from the top of the whatever the experimental design, or you can say that I will take the 4 or 5 experiment of the middle of the design, or the last of the design. It's not like that. There is the pattern, or there is the some system is there in order to reduce the number of the experiment. So first of all is that is the this orthogonal array concept is used in order to find out the in order to minimize this number of the experiment. Suppose what we will do that. Suppose if you uh, as if you look here, that this is the reduced number of the experiment. This is only 9 experiment that you have to carry out. Why this 9? Since in order to decide the number of the experiment, first of all you have to calculate the degree of the freedom for the each factor. ठीक है, each factor का degree of freedom क्या होगा, factor A का degree of freedom क्या होगा, factor A क्या है, factor A 3 levels में defined है, तो इसकी degree of freedom क्या होगी, 3 minus 1, that is the 2. Similarly factor B का कितना होगा, 3 minus 1 2, C का कितना होगा, 3 minus 1 2. So if you see the interaction 1 A cross B cross C, there will be the 8, and therefore जो भी मेरे को ऑर्थोगोनल अरे चूज करना होगा, दैट इज आफ्टर द 8, एंड whichever there is the after 8 is the minimum, we have to select that orthogonal array. That is the L9 orthogonal array is the after the 8 L8 के बाद जो है वो L9 है, तो मैं L9 को मैं सेलेक्ट करूंगा. लेकिन ये L9 का सिलेक्शन का जो हो रहा है, इसके पीछे का प्रोसीजर क्या है? इसके पीछे का प्रोसीजर ये है कि सपोज if you are going to hide this A value, if you are going to cut this A value, suppose, then if you are looking only to the B and C value, then B has the 3 level of the experiment and the C has the 3 level of the experiment. Therefore, if you see the total combination of the experiment between the B and C is the 9, and you can find here that there is the total number of the experiment is the 1 1 1 2, and there is a 9 experiment, and all the possible combination between the B and C are the available in this set of the experiment. Suppose if you are going to, suppose if you look here, we have, if I have 3 1 3 experiment, suppose I will take 3 1 3 experiment, that is the 21 number of the experiment in the array set 1. Suppose here I have taken the 3 3 and 1. If I will close this A, then if I look here, we find that combination of the 3 and 1 is the set of the 9 of the experiment, which already we have taken in the experiment number 6. Clear है यहाँ पे? हेलो हेलो, am I clear or not? आप यहाँ पे देखो, अगर आपने 331 ले लिया इंस्टेड ऑफ द 332 सेट ऑफ, रिप्लेस कर दिया आपने, तो जब मैंने ये A को हटाया तो आप यहाँ पे देखोगे कि आपने यहाँ पे जो बचा 3 1 कॉम्बिनेशन ऑलरेडी आपने यहाँ पे कैरिड आउट नंबर एक्सपेरिमेंट नंबर 6 में कर चुके हैं, और आपका ये जो कॉम्बिनेशन 3 2 है वो मिसिंग हो गया आपका. तो इन ऑर्डर टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस फॉर द every factor, it cannot be determined. Therefore, how we are going to select the total possible combination? We have to select in order to in a such a way that if we are going to hide any of the factor from the rest of the factor, then remaining factors have the all the possible combination of the experiment. So if you look here 1 1 2 1, suppose if you are closing this C value, and if you look the A and B, then what will happen? If you look here, then all the possible combination between the A and B has been given in this set of the experiment. So
आपको क्या है, आपके पास जो भी पॉसिबल नंबर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट है उसमें से आप कैसे रिड्यूस करोगे, आप कैसे अपने ऑर्थोगोनल एरे कंसेप्ट से बनाओगे। आप ऐसे बनाना कि अगर आपका एक फैक्टर को भी अगर मैं हटा देता हूं तो बाकी के जितने फैक्टर हैं उसके सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट उसमें आ जाए, अदरवाइज उस चीज को आप नहीं चूज करना। इसीलिए अगर आपने ये टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट है तो आउट ऑफ दिस we have reduced the number of the experiment and formed a new experimental design which considered the serial number 1, 5, 9, 11, 15, 16, 21, 22 and 26, and out of these 27 we reduce the number of the experiment to the 9। अब आप मेरे से कहोगे कि सर आपने 27 को 9 में कन्वर्ट किया, सिर्फ 18 एक्सपेरिमेंट तो नहीं कैरी आउट करना है, तो उससे हमें क्या ज्यादा फायदा मिला। तो इससे मैंने आपको पहले ही बोला आपको कि ये 27 को आपने 9 में किया, आप 125 को कितने में कर दोगे, ठीक है। अब as the number of your factor is going to be increased or its level is going to be increased, then total possible combination is going to be increased. So or you can say that in order to reduce the number of the experiment, Taguchi utilizes the orthogonal array concept, and from the orthogonal array concept you can reduce the number of the experiment, and from the reduced number of the experiment you are going to carry out your experiment, and you can note down your observation, and you can conclude from that result for the whole combination of the experiment। आप क्या कर सकते हो, आप जो भी रिड्यूस नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट आपने किया है उससे आप एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेंगे, उस पे एक्सपेरिमेंट करने के बाद आप क्या करेंगे, आप ऑब्जर्वेशन लेंगे, और ऑब्जर्वेशन लेने के बाद भी आप क्या कर सकते हैं, यू कैन predict the result for the 3-1-3-1 combination, you can predict the result for the 2-3-3 combination, you can predict for all the values, or you can predict for all the 27 experimental runs, or you can predict the result that you cannot, the actual experiment that you have not performed, जो भी आपने एक्सपेरिमेंट आपने नहीं किया आप उसका भी रिजल्ट परफॉर्म कर सकते हैं in order to validate your result। तो अभी तक आपने देखा कि you have seen that how Taguchi is going to reduce the number of the experiment। Taguchi कैसे reduce करता है, Taguchi orthogonal array concept लेकर करता है। That's why orthogonal array concept क्या है, orthogonal array concept जो है ये आपका लैटिस मैट्रिक्स के फॉर्मेट पे बेस हुआ है। That's why the experimental design in the Taguchi has been represented with the letter L। ठीक है, am I clear? फिर क्या, जब मेरा तागुची एक तो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट को रिड्यूस किया, दैट इज द एफिशिएंट वे टू रिड्यूस द नंबर ऑफ द एक्सपेरिमेंट। सो advantages of the orthogonal array is that it guarantees the test in the pairwise combination of all the selected variables। As I have said that if you can see that all the possible combination of the variables has been done and you can calculate for that one, and it creates the efficient and the concise test set with the many fewer tests, as you have the total number of the 27 experiment and you have reduced the only 9 number of the experiment, and it creates a test that even distribution of all the pairwise combination, or you can see here even pairwise of the combination। What does it means that if you look the factor as the A, and A suppose if you are considering the level 1, so level 1 is appears 3 times here in the first column। In the first column you can say that level of the factor is 1 is appear 3 times, therefore B, if you look for the B, the level for the factor 1 is available here in the 3 times, and here it is the 3 times। So whatever the levels in the column, it should be the evenly
डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ पे 3 टाइम्स है तो इसमें भी 3 टाइम्स होगा, इसमें भी 3 टाइम्स होगा। अगर यहाँ पे 2 टाइम्स होगा तो इसमें भी 2 टाइम्स होगा और इसमें भी 2 टाइम्स होगा, ए में भी 2 टाइम्स होगा, बी में भी 2 टाइम्स होगा। अगर आप लेवल 3 का भी बात करें तो लेवल 3 अगर ए में 3 बार है तो बी में भी 3 बार होगा, सी का भी 3 बार ही होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, तो ये आपका पॉसिबल इवनली पॉसिबल कॉम्बिनेशन देता है। अगर आप सपोज मैंने आपको यहां पे बताया था कि अगर मैं इसको रिप्लेस कर दिया 3 3 1 में, 1 में यहां पे रिप्लेस किया तो मैंने देखा कि यहां पे 1 कितनी बार आया, 1 2 3 एंड 4 टाइम्स। सी में 1 4 टाइम्स आया तो बी में 3 टाइम्स आया, तो डेफिनेटली ही फ्रॉम द हियर यू कैन आल्सो कंक्लूड दैट दिस इज नॉट द ऑर्थोगोनल अरे, it will not give the orthogonal array, and that's why it's not the efficient strategy for the conducting the experiment. Am I clear? So it is the simple to generate and the less error prone than test it should be created by the hand. Actually क्या it is if you are using the any statistical software such as the Minitab or the design experiment, you have to only give the number of the factors 3, level is the 3, all the design of the experiment will come. Clear है? तो कागुची में क्या है कि आप इसको आप इजिली खुद से बाय हैंड से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, आपको स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट what is the problems or the limitation of the orthogonal array, or you can say that Taguchi method. The limitation is that it only interprets the main effect of the factor, or you can, or in the other way you can say that you cannot find the interaction effect. जैसा कि हमने फुल फैक्टोरियल 2 की पावर k डिजाइन में देखा था कि हमने वहां इंटरेक्शन का इफेक्ट फाइंड आउट किया था, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम इंटरेक्शन का इफेक्ट नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इट ओनली गिव्स द मेन इफेक्ट प्लॉट और द, और यू कैन से दैट it is convenient to determine the main effect of the factor. ठीक है, here it has been written that if you are calculating with the hand, there is the factor that you are going to be some chance of the missing the any possible combination. Then this is the way how the Taguchi is going to design the experiment. But Taguchi also utilized for the optimization techniques. ठीक है, ये optimization techniques के लिए भी utilize होता है, और for the optimization techniques it use the signal to noise ratio concept. एक्चुअली क्या है कि जो तागुची हैं वो इलेक्ट्रिकल साइंटिस्ट थे इन द जापान, एंड अर्लियर 90s 80s में हमारे पास जो टीवी होती थी, इफ यू लुक द टीवी, what you can say that if you look the TV, it was like this, and there is a component which is used to set the change the USA, there is some problems in there for catching the frequency. So in that, as the electrical engineer, he gives the signal as the useful data, and the n is the n goes for the noise factor, and that is the disturbance. So he gives the signals to rise the concept, and which determine the quality loss function. Suppose if you have the some target value, then there is the some its upper limit deviation and its lower limit deviation. Suppose if you look for the example,
that if I am wearing the shirt is the you can say that this is why the target value of the size is the 40, and if you are going to sorry here it is the LAL and this is the UL. As the if I am going to wear the 39 number of the side of the shirt, then what will happen? It is going to fit me on the some tight. सपोज करो कि मैं 40 नंबर का शर्ट पहनता हूं, तो वो मेरे को एज इट इज फिट आएगी, लेकिन मेरे को जैसे ही मैं 39 का पहना तो वो क्या होगी, वो मेरे को टाइट होगी। 38 का पहनूंगा तो वो मेरे को बहुत टाइट होगी। तो क्या हुआ, सिमिलरली जो जो टारगेट वैल्यू है वहां से ये एग्जैक्टली क्या होती है कि तो फंक्शन है। हेलो, एम आई ऑडिबल? तो तो जैसे मैं क्या होता है कि जैसे मैं अगर शर्ट पहनता हूं तो ये जरूरी नहीं कि 39 नंबर का शर्ट मेरे को टाइट हो गया और मैं छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता। 39 नंबर का क्या होगा, वो मेरे को 40 नंबर जो फिट होती है उससे थोड़ी सी मेरे को थोड़ा सा टाइट होगा, फिर 38 वाला क्या होगा, वो थोड़ा ज्यादा टाइट होगा, फिर 35 वाला मेरे अंदर में नहीं आएगा। ठीक है, तो सडन से क्वालिटी आपकी खराब नहीं हो जाती, इट विल गोइंग टू बी रिड्यूस, और देयर विल बी द फंक्शन दैट इज द लॉस इज द विल बी द सम क्वाड्रेटिक फंक्शन लाइक। सिमिलरली अगर मैं 40 नंबर का शर्ट पहनता हूं तो 42 नंबर का मेरे को थोड़ा ढीला होगा। तो दिस इज द concept that he has utilized in order to determine the signal to noise ratio in order to optimize the parameter function. Uh, so, or you can say that on the basis of the nature of the response, this signal to noise ratio has been characterized in the three different ways, and their formula is the thing is like that. Suppose if you are considering the diameter of the shaft, then we have the nominal is the best wing. It's considering the surface roughness and the pinholes in the casting method. So, or one wanted product while doing the manufacturing. So, your aim is to minimize the surface roughness. Hello, hello. Actually, I think that there is a network issue. Uh, my call was dropped. So, what I am saying that here, if your response is the your nature of your response is the yeah. Hello, PPT is not visible. Okay, just I'm checking that one. Now it is visible. Just a second. I think that I have to stop.
Nowadays, if my screen is visible to you, It's visible now, sir. visible. Yes, sir, it's visible. Actually, what I am trying to say here that if you suppose if you are doing any casting process, then you if the in the casting whatever the product that you have found, if there is a pinhole, or you can say that if you are doing the any uh, machining operation, then the quality, the surface roughness of that product, it should be the minimized. So depending upon the nature of the output response, that signal to noise ratio has to be determined. So if your nature of the response is the lower is the better from better criteria, then you can then you can then you can determine the signal to noise ratio using the this equation, that is the 1 by L if there is the replicate is there, and yjk square is the whatever the surface roughness you have achieved. If you have the done for the two replicate, then one first one y1 plus y1 square plus y2 square and 1 by 2. Am I clear? So by using this formula, you can going to calculate the signal to, if your if your quality doing the मशीनिंग ऑपरेशन, देन जहाँ पे अभी जैसे ये शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है, यहाँ पे क्या पार्टिसिपेशन, अगर पार्टिसिपेंट का अगर पार्टिसिपेशन ज्यादा होगा, ये आदमी डिजायर करता है, इट शुड बी द मैक्सिमम. सो on that term we have to compute the signal to noise ratio, where we have to by using this equation, and this will give the result for the signal to noise ratio, where we have the response is the you can say that response whatever the output characteristic is the higher value is be has been preferred. So why we should use the Taguchi approach? Because the experimental efficiency, as it is, as I have said that experimental efficiency, it means that it is going to reduce the number of the experiment. Second thing is that, sorry, as it is reduce the number of the experiment, and secondly it can be easily applicable for the data analysis, and this gives the higher probability for the success, as we have conducted the low number of the experiment, and you can compute for the remaining experiment. This is the way how you can implement. The second important thing is that how it is going to be carried out. So you have to three factors and the three levels, and you have to conduct the experiment, and suppose you have the three factors such as the drill speed, feed, and the drill diameters, and you have to design the experiment, and on the basis of this experiment you have computed the circularity average. Then you have to find out that what is the effect which
which parameter has the most significant effect over the output, and what is the optimal combination for the uh, for for the optimization of the circularity. So first step is that you have to identify the process parameter. Since it is a drilling operation, so then therefore drill diameter, speed and the drill feed has been considered as a process parameter, and their range, their values, the different values or the different levels assigned for the each factor is considered as the domain of the experimentation. Then you design the experiment using the L9 orthogonal array concept, and on the basis of the experiment you have conduct the experiment, and then you have measured the responses as the circularity, and you have there is a circularity 1 and the circularity 2. It means that you have conducted the sorry you have conducted the experiment in the suppose you for the serial number 1, that is this is the treatment, that is the when the factor is the 1a, b1 and c at the level 1, you have repeat this treatment twice in order to determine the this treatment, that is the factor a at the level 1, b at the level 1 and c at the level 1. You have determined this circularity 1, and again you repeat this treatment, and the second time you got this value as the 0.841. Now you have to find out that out of these three factors, which factor is the more influential, and 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 what is the optimal parametric combination. So in order to find which factor is the important, you can go with the ANOVA, but here in the Taguchi method, ANOVA is not being preferred. ANOVA has not been preferred for determining the which factor is the significant or the which factor is the insignificant, because in the Taguchi method the main only the main effect plot, or you can say that main effect of the factor has been considered, and the interaction their interaction effect has not been assumed to be taken as the negligible. ठीक है, क्या होता है कि Taguchi मेथड में हम क्या करते हैं, सिर्फ जो भी फैक्टर, जो मेन फैक्टर्स हैं, बस हमें उसी चीज को कंसीडर करते हैं, और बाकी जो भी उनका इंटरेक्शन होता है, फैक्टर्स के जो आपस में इंटरेक्शन होते हैं, उसको हम लोग एज ए नेग्लिजिबल मान के चलते हैं. इसीलिए हम इसमें एनोवा नहीं कंप्यूट करते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ द मीन रिस्पांस टेबल ओनली वी कैन फाइंड आउट दैट विच फैक्टर, वी कैन से दैट विच फैक्टर इज द इन्फ्लुएंस और विच फैक्टर इज द लेस सिग्निफिकेंट. ठीक है, इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं. सपोज अगर आपका हमारा ये जो फॉर्मूला है, this is the circularity, and the circularity we have considered here as the higher is the better value. Then for this circularity we have to compute the signal to noise ratio, and the signal to noise ratio is you can say that it can be found by the using the higher is the better criteria formula, and that formula is the minus 10 log 1 upon में, that is the 0.852 square. By this we can find out this SN ratio. If you can also find out the SN ratio for this one. I actually what I have taken. I have already first I have taken the average.
if you want, you can take the average. If you don't want, you cannot take as a average value, or you can find out like this one, minus 10 log, and this value has been 1 by 0.8863 square, or plus 1 by 0.841 square, and this value is here it is since replicate is the 2, so you can divide it by the 2. Am I clear or not? Similarly, you are going to compute for the all line set of the experiment. You are going to compute the signal to noise ratio for the every set of the experiment, and you have computed as this signal to noise ratio. So how this value has been come, we will discuss later. First we see that out of this factor which factor is going to be important. Out of this A, B, C, which factor is going to be important. Then we calculate the average SN ratio for the cutting speed at the level 1. Suppose if you are considering the drill speed A, so what will be the average speed SN ratio? So I will took the SM, I will choose the value of A at the at the level 1 is this one. So I will take this average divided plus average of these 3 value, and we can say that this is the average value of the average SN ratio value at the level 1. Similarly, we can find for the 2. Similarly, we can find for the 3 average SN ratio. For the factor B, how will you find out that जहां B पे 1 पे है उस वैल्यू को मैं कंसीडर करूंगा. जैसे B की वैल्यू 1 कहां पे है? नंबर 1 पे है, नंबर 4 पे है, नंबर 7 पे है. So we will take the SN ratio value 1 from 4 value and for 7 value. So 1, 4 and 7. We take the average of the SN ratio values of the experimental run 1, 4 and 7 in order to find the effect of level 1 for the factor B. Am I clear? ठीक है. वैसे ही हम क्या करेंगे, हमको अगर C का लेवल 3 का इफेक्ट देखना है, तो हम क्या करेंगे, जहां जहां C लेवल 3 पे है उसका कॉरस्पॉन्डिंग SN रेशियो को हम लेंगे. जैसे यहां पर एक्सपेरिमेंट नंबर 3 पे है, एक्सपेरिमेंट नंबर 5 पे है, एक्सपेरिमेंट नंबर 7 पे है, तो हम SN रेशियो 3 का लेंगे, 5 का लेंगे और 7 का लेंगे और उसका एवरेज करेंगे. तो वो हमको क्या दिखाएगा, वो हमको दिखाएगा द एवरेज वैल्यू ऑफ लेवल 3 फॉर द फैक्टर C. ठीक है. वो वैल्यू हमको क्या डिनोट करेगा, वो वैल्यू हमको एवरेज वैल्यू लेवल 3 का फैक्टर C का लेवल 3 पे एवरेज वैल्यू हमें बताएगा. दिस इज कॉल्ड एज द हाउ वी कैन डिटरमाइन द average SN ratio value for the all these 3 factor for the all the levels. So once you find the levels average value, you can write in this table. Suppose if you look here or you can check with the calculator also, you can check here that this is the factors, this will gives the average value of the SN ratio for the factor A, B and C at the level 1, level 2 और the level 3. सारा ये हमको मिल जाएगा. तो इसका जब मैं ग्राफ
इसके से मैं अगर ग्राफ प्लॉट करूंगा तो ये ग्राफ हमारा ऐसा आएगा, ठीक है। लेवल 1 पे क्या है, लेवल 2 पे क्या है, लेवल 3 पे क्या है, लेवल 1 फॉर द फैक्टर बी, लेवल 1 पे क्या है, लेवल 2 पे क्या है, लेवल 3 पे क्या है। तो इससे आपको ये हमको मेन इफेक्ट प्लॉट मिल जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ द मेन इफेक्ट प्लॉट वी कैन से दैट वेदर द वैल्यू इज गोइंग टू बी इंक्रीज और कैन डिक्रीज। अब ये तीनों वैल्यू से हमें कैसे पता चलेगा कौन सा फैक्टर ये ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम इसका डेल्टा वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। डेल्टा वैल्यू क्या है, ये डेल्टा वैल्यू क्या है, ये जो लेवल 1 2 3 फॉर द फैक्टर ए देख रहे हैं उसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम वैल्यू क्या है। मैक्सिमम वैल्यू -0.75 है और मिनिमम वैल्यू कितनी है, -1.08 है। तो ये इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट इज गिव्स द डेल्टा वैल्यू। डेल्टा वैल्यू इज नथिंग, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम फॉर द लेवल्स। जो भी लेवल्स का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगा उसका डिफरेंस ही डेल्टा वैल्यू को इंडिकेट करेगा। और जब डेल्टा वैल्यू हम बी के लिए भी सिमिलरली फाइंड आउट करेंगे, बी के लिए हम मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है, -830 है, मिनिमम वैल्यू कौन सा है, -9375 है। तो हमारा डेल्टा वैल्यू यहां पर आया है। सिमिलरली हमारे सी के लिए भी आया, सी के लिए -6.5 और -1.3। तो हम इस दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो वो कितना आया, 0.657 है। और ये तीनों डेल्टा वैल्यू को हम कंपेयर जब देखेंगे तो जो भी डेल्टा वैल्यू हायर आएगा दैट विल गिवन एज द रैंक 1, ठीक है। और बेसिस ऑफ द डेल्टा वैल्यू वी आर गोइंग टू रैंक द फैक्टर्स। तो ये रैंक सी को डेल्टा वैल्यू इसकी इंपॉर्टेंट है तो हमने इसको रैंक 1 दिया, बी को क्या दिया, इसको 3 दिया, और ए को क्या दिया, इसको 2 दिया। क्लियर है। तो जो रैंक हुआ वो फैक्टर सी is ranked 1, so we can conclude that factor C has the major contribution over the circularity। मतलब इसका क्या है, जो फैक्टर C है उसका मेजर कंट्रीब्यूशन है, मेजर रोल है सर्कुलरिटी पे, और followed by the A and followed by the B, or you can say that B has the less effect over the circularity as compared to the A and C। क्लियर है। फिर कहा है यहां पर, अब अगर हमको ऑप्टिमल सेटिंग फाइंड आउट करनी है, ऑप्टिमल सेटिंग मतलब क्या कि कौन सा सेटिंग पे हमको अच्छी सर्कुलरिटी मिलेगी। तो जो भी हायर वैल्यू ऑफ एसएन रेशियो होगा दैट विल बी कंसीडर्ड एज द comes under the optimal setting। Suppose if you look here this graph or you can see look here in this table, then you are going to prefer the level 3 of the factor A। So in the optimal setting it will come as the A3, that 3 denotes the level of the level for the factor A। Similarly if you look here for the B, then its B value, that is the highest value is the third, so it will come here as the third। Similarly C, it will become as the 3। So this the optimal setting is called as the A3, B3 and C3। Suppose if your criteria is the smaller is the better, suppose if the nature of your response is the smaller is the better, so you will compute the signal to noise ratio by using the formula -10 log 1 upon में y square, sorry 1 y square। ठीक है, जो एसएन रेशियो स्मॉल इज द बेटर क्राइटेरिया उसको यूज करके आपने उसका फाइंड आउट कर लिया। क्लियर है, एसएन रेशियो है ना। और उसके कारण आपने क्या किया, वैसे ही लाइक आपने एक टेबल बनाया। तो यहां पे जब आप इसको देखोगे वहां पे क्या होगा, सिग्नल टू नॉइज रेशियो इज द, आपका क्राइटेरिया क्या था, स्मॉलर इज द बेटर, तो यहां पे क्या हो जाएगा, स्मॉलर इज द बेटर क्राइटेरिया आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस कॉरेस्पॉन्डिंग सेटिंग में सपोज करो यही मेन इफेक्ट प्लॉट आपका आया है फॉर द, जो भी आपका आउटपुट रिस्पॉन्स जो आपका सर्कुलेटरी था वहां पे सरफेस मान लो, तो यहाँ पे सिग्नल टू नॉइज रेशियो क्या हो जाता है, आप कैसे कंप्यूट करते हैं, आप स्मॉलर इज द बेटर क्राइटेरिया। तो यहाँ पे क्या होता, लार्जर की जगह वो स्मॉलर हो जाता। ठीक है, अब यहाँ स्मॉलर हो जाता तो आप इसमें ऑप्टिमल सेटिंग कौन सा लेते, आप मेरे को बताइए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं उसमें यहां पर अगर स्मॉलर इज बेटर है तो मैं उस एसएन रेशियो की स्मॉलर वैल्यू को मैं चूज करूंगा, ठीक है,
तो वो मेरी ऑप्टिमल सेटिंग आ जाएगी। सपोज करो कि अगर मैं इसको देखूंगा तो मैं यहाँ पे A2, B1 और C1 इज माय द ऑप्टिमल सेटिंग अगर आप ये बोलोगे तो ये गलत होगा। ये इसलिए गलत होगा क्योंकि ऑलरेडी आपने उसको कन्वर्ट कर दिया है सिग्नल टू नॉइज रेशियो में, और जो सिग्नल टू नॉइज रेशियो आई है इट इज ऑलवेज बी कंसिडर्ड एज द हायर वैल्यू ऑफ द सिग्नल टू नॉइज रेशियो इज द प्रिफरेबल। हायर वैल्यू ऑफ द सिग्नल टू नॉइज रेशियो इज द प्रिफरेबल, सो you have to choose the highest value of the signal to noise ratio। ठीक है, आपको क्या करनी है, आपको हाईएस्ट वैल्यू ऑफ सिग्नल टू नॉइज रेशियो को चूज करना, चाहे यहाँ पे स्मॉलर इज द बेटर क्राइटेरिया ही क्यों ना हो, यहाँ पे लिख दे। ठीक है, लेकिन वंस जब आपने क्राइटेरिया को जो आउटपुट रिस्पॉन्स है उसको सिग्नल टू नॉइज रेशियो में कन्वर्ट कर दिया, तब आपको जो भी उसमें वैल्यू आएगी, तो अगर आप सिग्नल टू नॉइज रेशियो वैल्यू को सिर्फ देखेंगे तो उसमें आपको हायर जो सिग्नल टू नॉइज रेशियो वैल्यू आएगी आप उसको प्रीफर करेंगे। ठीक है, तो आपकी जो ऑप्टिमल सेटिंग अगर यहाँ स्मॉलर इज द बेटर भी लिखा रहता तो आपकी ऑप्टिमल सेटिंग एज इट इज A3, B3 और C3 ही रहती। Am I clear or not? ठीक है, अब ये जो सेटिंग आई A3, B3 और C3, ये जो सेटिंग आई ये आपको ये ऑप्टिमल सेटिंग है कि नहीं ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या है, यू हैव टू predict the SN ratio. You have to predict the SN ratio, and the SN ratio has been predicted by using the formula. You can say that using the formula predicted SN ratio, that is the PSN ratio is the calculated whatever the A3 mean value, that is the optimal setting A3 plus B3 mean value and C3 mean value minus 2 signal to noise ratio, that is the X mean। ठीक है, आप क्या करोगे, आप मीन वैल्यू ये आया आपका, ये आया और ये आया, ये तीनों को सम करोगे माइनस 2 टाइम्स ऑफ व्हाट, माइनस आप जो भी ये सिग्नल टू नॉइज रेशियो आपने जो कंप्यूट किया है इसका मीन निकालोगे, सारे का आप एवरेज निकालोगे, दैट इज द मीन वैल्यू ऑफ द एसएन रेशियो। आप जब उसको रखोगे तो आप इसको फाइंड आउट करोगे, दिस वैल्यू हैज बीन अचीव्ड, और जो भी आपकी प्रेडिक्टेड एसएन रेशियो आई है उसको क्या करेंगे, आप उसको इस कंप्यूटेड एसएन रेशियो से कंपेयर करेंगे। ठीक है, अगर आपकी ये जो प्रेडिक्टेड एसएन रेशियो आई है वो अगर आपसे ये जो कंप्यूटेड एसएन रेशियो है उससे ज्यादा है, तभी आपका जो ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन जो आपने फाइंड आउट किया है वो सही है। ठीक है, अगर ये छोटा है, अगर इस कंप्यूटेड एसएन रेशियो से किसी से एक से भी छोटा है तो डेफिनेटली देयर इज द मिस्टेक एंड यू हैव टू रिपीट द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, दैट इज नॉट गिव्स द ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन। क्लियर है, पक्का है, प्रेडिक्टेड क्लियर है आपको? हेलो सर कैन यू प्लीज रिपीट सर? हाँ, देखिए आपको प्रेडिक्टेड एसएन रेशियो जो है आपने क्या किया, आपकी जो भी ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन आ रही है, जैसे A3, B3, C3 आई, तो आपने A3 का मीन जो है, जो आपने मीन टेबल में बनाया, मीन रिस्पांस टेबल में ये, और B3 का और C3 का, सिर्फ अगर आप सपोज करो यहाँ A3, B2, C3 रहता तो आप यहाँ पे B3 का मीन नहीं लेके आप क्या करते हैं, C2 का B2 का मीन लेते। ठीक है, और माइनस 2x बार, दैट इज द x बार इज नथिंग, इट इज द मीन ऑफ दिस कंप्यूटेड एसएन रेशियो। ये सारे का जो है ना, सारे का जो मीन निकाला आपने, दैट इज गिव्स द एक्स बार। अब जो भी प्रेडिक्टेड एसएन रेशियो आपने कंप्यूट किया, सपोज करो आपने ये प्रेडिक्टेड एसएन रेशियो कंप्यूट किया, तो ये जो प्रेडिक्टेड एसएन रेशियो जो आपका आया, ये आप जब इसको कंपेयर करोगे इस एसएन रेशियो से, सारे जो भी आपने कंप्यूटेड किए हैं एक्सपेरिमेंटली, उससे आपको क्या होगा, उससे ज्यादा आना चाहिए, उसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू दिस वन। ठीक है, अगर ये ज्यादा है तो आपका जो ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन आया है वो अच्छा है, अगर ये ज्यादा नहीं आया है तो आपने कहीं ना कहीं गलत किया है और वो ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन नहीं होगा।
There, so you can conclude that whatever the predicted SN ratio that you have been predicted, it should be the higher among the computed SN ratio. Am I clear or not? Yes, sir. Yes, sir. Thank you. ठीक ठीक है, अगर ये चीज आपका हो गया, ठीक है। अब आपके पास एक चीज है कि सपोज करो आपने जो एक्सपेरिमेंट नहीं कैरिड आउट किया है, सपोज करो टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट कितने थे, 27 थे। अगर आपने मान लो कोई भी एक एक्सपेरिमेंट जो आपने कैरिड आउट नहीं किया, जैसे यहाँ पे क्या है 233 भी नहीं काउंट किया होगा, आपने नहीं किया होगा 233, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे आपने 9 है तो 233 आपका यहाँ पे नहीं अवेलेबल है। या सपोज करो 112 ही नहीं कैरिड आउट किया है, 112 भी नहीं कैरिड आउट किया, कोई भी मान लो आप, सपोज करो 112 ही नहीं कैरिड आउट किया है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग में मेरे को सर्कुलरिटी वैल्यू अगर जानना है तो वो भी वैल्यू मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूं बिना एक्सपेरिमेंट किए हुए, क्योंकि हमारे पास ऑप्टिमल सेटिंग क्या आ गई, हमारे पास ऑप्टिमल सेटिंग ये है, ठीक है। और सपोज करो कि मेरे को फाइंड आउट करना है किसके लिए, जस्ट सपोज आई हैव टू फाइंड फॉर द A1, B1 एंड C3, सपोज करो। तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं प्रेडिक्टेड एसएन रेशियो क्या करूंगा, इसका पी वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, A1 की मीन वैल्यू प्लस B1 की मीन वैल्यू प्लस C3 की मीन वैल्यू और माइनस 2x, दैट इज द एवरेज एसएन रेशियो फॉर द कंप्यूटर, ठीक है। और इससे क्या हो गया, मेरी को प्रेडिक्टेड एसएन रेशियो कोई वैल्यू आ गई, सपोज करो कोई भी आ गई -4.5 मान लो, ठीक है। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग में क्या करूंगा, मैं इसका एंटी लॉग ले लूंगा तो वो कॉरस्पॉन्डिंग सर्कुलरिटी दे देगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, एम आई क्लियर और नॉट? यस सर, यस सर। मेरे को क्या करना है, मेरे को प्रेडिक्ट वैल्यू करना है और उसका क्या करना है, इसका मैं एंटी लॉग लूंगा। आप इसका एंटी लॉग लोगे तो आप डेफिनेटली देखोगे ना कि ये जो भी सर्कुलरिटी आपने निकाला उसके एवरेज से ये ज्यादा होगा, आई एम 100% श्योर, ठीक है। सिमिलरली जो भी आप प्रेडिक्ट करोगे किसी पर्टिकुलर सेटिंग के लिए और उसका क्या कर लेना, उसका एंटी लॉग निकाल देना, तो आपको उस पर्टिकुलर सेटिंग के लिए आपको क्या दे देगी, आपका सर्कुलेटरी प्रेडिक्टेड सर्कुलरिटी आपको मिल जाएगी। जो भी आपने एक्सपेरिमेंट नहीं किया उसका भी रिजल्ट आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट द तागुची अप्रोच। तागुची इज यूटिलाइज्ड in order to minimize the number of the experiment, first thing, and it is also be used to find out the optimal parametric combination. It is also used for the optimization process. So I think it's over. Do you have any query or any question? Sir, sir, can you please throw some light on if the number of levels vary from parameter to parameter combination? Like, will it be covered in the next sessions? I don't know, but assume that. Suppose if actually here I have considered as the number of whatever the number of the factors, what their level is the same, 3 factor 3 level. Suppose if there is the factor in which you have varied the five levels, and second factor suppose B you are varied into the only 2 level, and factor C if you are varied into the 4 level. ठीक है, जहां तक मेरे को लग रहा है अगर आप ऐसा क्वेश्चन पूछ रही हैं तो। हेलो, Yes sir, yes, that's what that. हाँ, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो उसमें क्या करते हैं हम, उसमें मिक्स्ड डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट में जाते हैं, मिक्स्ड तागुची अप्रोच में जाते हैं, ठीक है। और उसमें हम उसको भी आपको डीओई बन सकता है, तो वो इट विल बी द लिटिल बिट सम डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स एंड यू कैन नॉट कंप्यूट बाय द हैंड, ठीक है। उसको थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, लेकिन आप उसको भी कैरिड आउट कर सकती हैं, आप उसको भी डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट बना सकती हैं एज द सिमिलर अप्रोच,
ठीक है, आप में वैसे नंबर ऑफ सेटिंग को टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट बना लीजिए और उसमें से आप कट करके भी बना सकते हैं विदाउट यूजिंग द एनी स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर। और अगर आप स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर यूज कर रही हैं तो वहां पे आपको बस कुछ नहीं करना है, वहां पे नंबर ऑफ फैक्टर डिसाइड करना है और उसके लेवल डिसाइड करना है और अकॉर्डिंगली आप उसको बना सकती हैं। ठीक है। Okay, sir. Thank you. एनी अदर क्वेश्चन और क्वेरी? I think that there is no question or no more questions. So I am going to end my session. Thank you, everyone. Thank you, sir. Yes. Thank you. Thank you. Okay, thank you, sir.